अस्सलामु अलैकुम क्लास 12th बायोलॉजी के प्यारे स्टूडेंट्स, बॉटनी स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका दिल से खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम नेचर ऑफ एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट्स के टॉपिक को डिटेल से समझेंगे। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे पंजाब बोर्ड के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टाइटल: नेचर ऑफ एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट्स। 1. Hypotonic environment, abundant water. Ammonia is very toxic and dissolves quickly in body fluids. Therefore, it must be kept in low concentration in the body. To maintain its low concentration, the body needs large volume of water to eliminate it in urine. This is possible in a hypotonic environment, fresh water. Therefore, animals living in hypotonic environment keep ammonia as their excretory product. About 500 milliliters of water is needed to excrete 1 gram of ammonia nitrogen. उर्दू: अमोनिया बहुत टॉक्सिक है और जल्दी डिसॉल्व हो जाती है, इसलिए इसको लो कॉन्सेंट्रेशन में रखना पड़ता है। इसके लिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए। ये फ्रेश वाटर यानी हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में पॉसिबल है, इसलिए aquatic एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। 1 ग्राम अमोनिया नाइट्रोजन के लिए लगभग 500 मिलीलीटर वाटर चाहिए। 2. Restricted supply of water, terrestrial environment. In restricted supply of water, ammonia cannot be kept as excretory product. Here, other alternative is to change it into less toxic substance, such as urea. Urea requires only 50 milliliters of water for excreting 1 gram of nitrogen, much less water than ammonia. The excretory nitrogen, ammonia, is metabolically converted into urea by urea cycle in animals inhabiting environments with restricted supply of water, e.g., terrestrial mammals. Water required to excrete 1 gram of nitrogen, as ammonia, approximately 500 milliliters of water, as urea, approximately 50 milliliters of water. Urdu: restricted water supply में ammonia नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। यूरिया के लिए सिर्फ 50 मिलीलीटर वाटर चाहिए। ये कन्वर्जन यूरिया साइकिल से होता है। टेरेस्ट्रियल मैमल्स यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। यूरिया साइकिल मेटाबॉलिक pathway. Ammonia plus CO2 leads to citrulline, then argininosuccinate, then arginine, and with arginase it produces urea and ornithine, and the cycle continues. Urdu: यूरिया साइकिल में अमोनिया और CO2 से सिट्रुलिन, फिर argininosuccinate, arginine बनता है और फाइनली यूरिया निकलता है। ऑर्निथीन साइकिल को कंटिन्यू रखता है। 3. Acute shortage of water, extreme arid environment. Animals inhabiting environments with acute shortage of water supply require an excretory product which can be excreted with minimum amount of water. Only 1 milliliter water is required to eliminate 1 gram of nitrogen in the form of uric acid. Therefore, reptiles and birds that inhabit arid environment excrete uric acid as excretory product. Animals are classified on the basis of their excretory products. Ammonotelic, excrete ammonia. Example, most aquatic animals. Ureotelic, excrete urea. Example, mammals, adult amphibians. Uricotelism, excrete uric acid. Example, birds, reptiles, insects. Urdu: extreme water shortage में uric acid best है क्योंकि सिर्फ 1 मिलीलीटर वाटर से 1 ग्राम नाइट्रोजन निकाल जाता है। Birds, reptiles or insects uric acid निकालते हैं। Classification: Ammonotelic, Ureotelic, Uricotelism. Key points: excretory products vary with water availability in the habitat. Ammonia needs more water, approximately 500 milliliters per 1 gram N, suitable for aquatic animals. Urea needs less water, approximately 50 milliliters per 1 gram N, suitable for terrestrial mammals. Uric acid needs very little water, approximately 1 milliliter per 1 gram N, suitable for birds, reptiles, insects. These are important evolutionary adaptations for survival in different environments. Urdu: excretory products habitat के water availability के मुताबिक change होते हैं। Ammonia aquatic के लिए, urea terrestrial mammals के लिए, uric acid arid environment के लिए best adaptation है। Dear students of Botany Study Hub, इस topic को अच्छे से revise करें।
अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड का कंपैरिजन, वाटर रिक्वायरमेंट और क्लासिफिकेशन याद करें। पंजाब बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक, स्टडी स्मार्ट, स्कोर हाई। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।